human hona na itself is it's something that needs to be taught. It's not just something that you're born and you're born as a very sociable creature. What I did not like about competition is being in a state of competition at all times with all other people. You lose, you learn, you hate yourself, you hate that people are better than you. कभी ना कभी तो वो बच्चा बड़ा होगा, बाहर जाएगा. There they keep score. And there they're not nice. सबसे ज़्यादा हमारे लाइक बच्चे होते हैं ना स्कूल में, अभी भी वो चीटिंग करते हैं. Let's forget like school, university professors भी. यहाँ वो वाला बंदा है जिसने बैचलर्स, मास्टर्स, PhD ये लेकिन कभी कहीं नहीं काम किया और वो आपको पढ़ा रहा है जिसके बारे में उसको कुछ नहीं पता. आपके कितने सब्जेक्ट थे? 14 थे. ओहो, क्या हुआ 14 में क्या आया था स्टार्ट्स में. Tough life. मेरे आए दो ही थे. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. आज हमारी मेहमान Jaweria Sethi हैं, the founder of Edopia. Edopia is a school with alternate learning. How do you sell this school? How do you sell this school? Yeah, so this is a democratic school. Democratic? Yeah, we're an alternate and democratic school. अच्छा. Yeah. Which has been there for the past 8 years. And democratic मतलब elections होती हैं क्या? The school जिसके अंदर the children have a voice and that voice is like a very integral part of the processes that we have at school. अच्छा, so you listen to the students etc. and we have like formal arrangements in place to make sure that happens कि बच्चे जो हैं school के जितने भी rules हैं उनको determine करने में active part play करें. अच्छा. So for example like uniform है? नहीं. तो they decide कि क्या कपड़े पहनने हैं? उन्होंने खुद रूल आउट कर दिया यूनिफॉर्म आफ्टर मतलब शुरू में जब स्टार्ट किया था वी हैड यूनिफॉर्म. आहिस्ता आहिस्ता वो निकलते अब नहीं है. अच्छा. और करिकुलम भी इस तरह डेमोक्रेटिकली डिसाइड होता है या करिकुलम प्री डिटरमाइंड? सो बेसिकली इवेंचुअली क्योंकि हमने भी अपना जो एंड गोल है वहाँ पे हमें ओ लेवल्स के साथ डील करना पड़ता है. सो वी डू हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ अ करिकुलम इन प्लेस जिससे it enables people to give O levels, but yes, there is an option that if you don't want to do O levels and you'd rather take a charge of your learning your way, you can opt out of things. Makes sense. So if I don't want to do O levels, तो फिर मैं क्या करूँगा? That's a choice. There are other pathways. ना मतलब आपने O levels नहीं करना, आपने you want to go to the a more creative side. आप कह रहे हैं I'm not bothered about university education. If you are, which is like I would say 99% of the people still want to do O levels. But if there is a daring family that would rather take an alternate path, आपके पास अभी तक कोई बच्चा है जिसने कहा कि मैंने O levels नहीं देनी? A levels नहीं देनी type आ जाते हैं. O levels more or less सब बच्चे दे रहे हैं, लेकिन A levels कुछ नहीं करना चाहते. We don't have A levels anyway, but there are children who are like we'd rather work on our creative fields. हम उसकी portfolio building की तरफ जाएंगे and we would not be pursuing A levels. And you've had kids who've just like gone towards creative fields. Like what kind of fields? Like music. अभी तक anyway स्कूल को 8 साल हुए हैं and जो हमारा बैच ग्रेजुएट किया है वो अभी सेकेंड ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी में है. बट इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन yes there have been children जो कहते हैं कि हमने एक्टिंग में जाना है, हमने सिंगिंग में जाना है, हमने आर्ट पे जाना है, साइड पे जाना है, हमने शेफ बनना है. So और ये बहुत यंग एज पे डिसाइड कर सकते हैं like फर्स्ट सेकंड ग्रेड में? नहीं, फर्स्ट सेकंड is too early. I feel like when they are in middle years, that's the time when you can start having these discussions. And middle years क्या होता है exactly? Middle years is around like 11. अच्छा. 11 on 10, 11 on. नहीं, लेकिन अगर एक बच्चा हो जो थोड़ा बस पढ़ना ना चाह रहा हो तो वो मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ. तो जब मैं बच्चा था तो उर्दू मैंडेटरी होती है ऑब्वियसली हर स्कूल में. तो मैंने क्या किया कि मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट था और मेरे जो क्लास में ना फॉरेनर्स होते थे फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, वो उर्दू नहीं लेते थे क्योंकि वो फॉरेनर्स थे. मुझे उर्दू समझ नहीं आती थी और बड़ी मुश्किल लगती थी. तो मैंने क्या किया, जाके टीचर को बोला कि ये मेरे ब्रिटिश पासपोर्ट. पहले तो घर पर रोला डाला, पता नहीं मेरी अम्मी क्यों मान गई. तो मैं जाके उनको अपना ब्रिटिश पासपोर्ट दिखाया. मैं कहा मैं भी फॉरेनर हूँ, मैंने नहीं पढ़नी उर्दू, मैंने नहीं पढ़नी पाक स्टडीज़, मैंने इस तरह कुछ नहीं पढ़ना. अब नाउ दैट आई एम ओल्डर I wouldn't say I regret it. I mean, I had a great time. मुझे क्योंकि फ्री क्लासेस मिलती थी, लेकिन I would have liked to be able to. मतलब काफ़ी embarrassing होता है. उस दिन मैं एक क्रिएटिव पिच पे काम कर रहा था, तो एक क्लाइंट को किसी चीज़ को दिखाना, तो उसमें सारी उर्दू में कॉपी लिखी थी, पढ़ी नहीं जा रही थी. अब मैं पूरी ज़िंदगी इधर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि बाहर कहीं रहा हूँ, लेकिन मैं उर्दू पढ़ नहीं सकता. Now that decision at 10-year-old me
shouldn't have made that decision, right? I mean, that's a really bad decision to make. There'll be so many other bad decisions you made at being हाँ, a 10-year-old as well, right? हाँ. So that's life, nahi? Ke you make some decisions, they are good. But how do you know मतलब what is good for the kid? So certain things, मतलब for example, like healthy eating habits are good for a kid, right? But वो शायद करना ना चाहे, मुझे जैसे ढीठ होकर नहीं खानी, नहीं पीना दूध, नहीं मतलब whatever vegetables नहीं खानी. तो उसी तरीके से education system में, because it's a democracy, can they just vote anything out? So it really has two levels to it. One is like what are your liberties on an individual level, and then what are your collective liberties, right? So at an individual level, for instance, if you want to walk out of any subject जो आपने नहीं लेना, तो you definitely need to have a discussion with your family as well. The family needs to come over. We need to have an in-depth discussion कि इसके क्या further आगे consequences क्या होंगे, क्या face करना पड़ेगा, बच्चे से बात करनी है and everything. And then they opt out of the subjects that they are taking. और छोटे बच्चों के लिए usually इतना जल्दी नहीं होता. The children, when they are slightly older, then they start talking about these things कि अगर किसी चीज़ से opt out करना है या नहीं करना है. And obviously they have to understand the context of what it would look like right now and in future. And collectively जो rule out करने वाली चीज़ें हैं at the democratic level, उसमें कुछ negotiables होते हैं, कुछ non-negotiables होते हैं. What's non-negotiable? For instance, they can't determine the salaries of the teachers. So that's a non-negotiable, right? Well, yeah, they can ask us to make a teacher leave though. अच्छा. Yeah, because if they are feeling ke, and उसमें भी ऐसे नहीं है कि अच्छा, so then in the negotiables there are some things that we tell them कि if the rule is passed right now, this will be implemented right away. But if there are certain cases, as for instance, if they are having an issue with a certain subject or a certain teacher, we will hear their side of the story. उस पर पूरा proposal draft होगा, क्या आपको issues आ रहे हैं, क्या चीज़ें आपको इसमें improve करने की ज़रूरत है. And if we still feel that they have a very valid point and there is really a problem, then yes, we're going to give a lot of weight to what they're saying. But ये नहीं होगा कि okay, ये teacher नहीं पसंद, सारे rule out कर दो, कल से अपना आइए. मतलब voting system इस तरह नहीं हो सकता कि मतलब उसकी salary काट दो. नहीं, मतलब there are certain non-negotiables and then there are quite a lot of negotiables. And non-negotiables के अंदर भी they get this freedom कि अगर वो एक proposal draft करें and वो अपना बताएं कि their side of the story, how are they going to take ownership of whatever is going to be the outcome of that thing. So that is something that's given a lot of weight and talked about. और classrooms का size छोटा है? 8 kids per total? teacher. मतलब on average that's the ratio that we maintain. So if there are 16 children, there are going to be 2 teachers in the class. अच्छा. Yeah. तो मतलब ये मैनेज कैसे? पहली बात तो हाउ डू यू मेक मनी देन? You struggle to make money. जिस स्कूल में मैं पढ़ता था 100 बच्चे होते थे, एक टीचर होती थी, कभी कभार वो भी नहीं आई हुई होती थी. तो how are you doing? This is the main thing that we get to hear a lot, कि आपका बहुत महंगा स्कूल है and it's not for the masses. And I understand because it is a little on the steeper side. कितना महंगा है वैसे? क्या 40,000 per month on average. हाँ, per month की थी. But that is where it is coming from as well, ना, कि अगर एक ट्रेडिशनल स्कूल में 30 बच्चों पे 24 बच्चों पे एक टीचर है, तो हमारी 24 बच्चों पे 3 टीचर्स हैं. सो आवर सैलरी बिल इज़ लाइक 3 times that of any other school. एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल कम है, जिसकी वजह से एक बहुत हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस तो बनता है, बट इट इज़ एक्सपेंसिव एंड दिस इज़ व्हाट मेक्स अस वांट टू थिंक अबाउट अदर डायरेक्शंस. इन कंपैरिजन टू द लार्जर स्कूलिंग, ये जो आपके एजुकेशन सिस्टम्स बने हैं, रूट्स, फ्रबेल्स, इस तरह के, बीकन हाउस, मतलब व्हाट्स द प्राइस डिफरेंस? आई थिंक डबल है almost. For some double है, for some less than double है, but the salary bill is 3 times, so you can see that we're not making that much money. Also not like मतलब वही वाली बात जो हम अभी ऑफर भी कर रहे थे, there's levels to this game ना, मतलब ISY है, etc. है, so I mean it depends on budgets and stuff like that. अच्छा, just for context to our listeners, हम अभी ऑफर भी डिस्कस कर रहे थे, आपकी O levels में क्या ग्रेड्स आए थे? मेरे अपने 13 A's. अच्छा, A levels में क्या आया था? 3 A's बस. अच्छा, 3 ही सब्जेक्ट लिए? 13 के बाद 4-5 ले लेती? नहीं, बस हो गई थी. अच्छा, फिर आपने फिर यूनिवर्सिटी की कहाँ से की? लम्स. अच्छा, क्या पढ़ा? इकोनॉमिक्स. GPA? 3.7. ठीक है, फिर कहाँ गई? हार्वर्ड. क्या पढ़ा? एजुकेशन. अच्छा, और क्या GPA? 3.95. अच्छा. Now, 9.8. the reason that I asked you this question और context देने के लिए ज़रूरी था, you are the star child of the system. आप वो वाली हैं जो नहीं फ्लायर्स पे नजर आते थे, वीकेंड के बच्चे हैं वो जिनके 13 हैं.
तो आपको क्या मसला नजर आया? मतलब हम जैसे बच्चे जो फेल हुए हैं, चलो हमें तो मसले नजर आए ना, आप अगर 13 एज ला रही हैं, you are essentially you are the perfect byproduct of the system. You are literally the poster child. तो फिर क्या इशू है? You are what the system wants to create. Yes, right? you are what the system is looking for. क्यों एक स्टार चाइल्ड को रिग्रेट्स नहीं होते? हो सकते हैं ना, मतलब नो सो बेसिकली 14 ये नहीं है रिग्रेट क्या था? हाँ वैसे नहीं आए 14 आए। आपके कितने सब्जेक्ट थे? 14 थे। ओहो, क्या हुआ 14 में? क्या बी आया था स्टैट्स में। टफ लाइफ, मेरे आए दो ही थे। चलें आप कंटिन्यू करें, लेकिन अपनी नो बेसिकली देखिए, मैं व्हेन आई वाज इन द स्कूल में आई वाज एट द फिश, जिसको पानी नहीं पता होता कि आपके इर्द गिर्द पानी है। अगर आप लाइक इवन द अदर डे समवन आस्क्ड के डिड यू क्वेश्चन स्कूल्स व्हाइल यू वर इन इट, आई सेड नो आई डिडंट, आई लव्ड स्कूल, आई एंजॉयड इट, आई वाज थ्राइविंग, यू नो। एंड देन इवन इन द यूनिवर्सिटी जब मैं वहाँ पे गई, तो the idea didn't really come from questioning university education. It came from identifying a gap that was there in the schools. कि मैं जब यूनिवर्सिटी में आई हूँ, मेरी लाइफ कितनी फिट है, यहाँ पे इतना कुछ हो रहा है, यू नो, वी गेट सो मच autonomy in terms of learning, we are learning what we want. हमारी जो even extra curriculars and they're so meaningful, they're so real life like, and why are the schools not doing that? You know, schools में भी हम इससे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, हमें बस बिठा देते हैं चेयर्स के ऊपर, डेस्क के ऊपर, सामने टीचर खड़ी हुई लेक्चर देती है, 20 मिनट की ब्रेक मिलती है। मतलब why are we doing that to the children or to us? मतलब why did someone do that to us? So वहाँ से I just felt कि you know this is something that needs to be questioned, and वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी obviously, लेकिन by the time हार्वर्ड तक आते आते ग्रोथ, मेंटल मेच्योरिटी, वो सब कुछ एक्सपीरियंस आया, and at that point I realized कि it's not only about augmenting whatever is being done and adding more to it, it is fundamentally questioning what is happening, right? And what that is something that we didn't do as the star kids or whatever, because hum ji sir, yes sir, let's do that, and jitni toxicity wo aapke andar bhar deta hai across all this time, that was also the time to question it, because मैं बहुत ज़्यादा competitive थी, and that competitiveness was like something that was filled in all through and through in my system. It made me a better person overall. किसी के लिए खुश होना नहीं आता था, you know, because you have to really be on top of everything. So these are the things that I feel like they're not very viable for a person to really do well for themselves to begin with, or socially or whatever. So हमने सबसे पहले कंपटीशन एलिमिनेट किया अपने स्कूल से। वी आर नॉट गोइंग टू हैव कंपटीशन इन दिस स्कूल, यू नो। तो आपने बड़ा एंजॉय किया। बस हो गया ना। बट आई रियलाइज ना, किसको कंपटीशन फायदा दे रहे होते हैं? वो 3-4 बच्चे जो क्लास के टॉप के होते हैं। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ देम? वी हेटेड यू गाइस। यू हेटेड अस। या 100%। मैं आज तक जो मेरे दोस्त हैं ना जिनकी स्ट्रेट एज आए थे, उनको मैं यही तंग, एक दो हैं जो मेरे साथ अभी, दे वर रियली गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन, मैं उनको आज तक तंग करता हूँ कि भाई तुम लोग जो थे ना, क्यों थे? हाँ मैं मतलब, और मैं उन्हें बचपन में ना कोई 8 साल की उम्र में कहता था, हम बड़े होंगे ना मैं तुझे बताता हूँ ये इस गेम में तू अच्छा है, लेकिन अभी बड़ी लंबी गेम है। लेकिन आई हैव अ क्वेश्चन। सो ये हुआ, आपको ये रियलाइजेशन हुई कि कंपटीशन एलिमिनेट करनी चाहिए है। व्हाई डू यू थिंक कंपटीशन शुड बी एलिमिनेटेड? Because it really takes out the aspect of, you know, like human hona na itself is it's something that needs to be taught. It's not just something that you're born and you're born as a very sociable creature. आपके ये schools वगैरह सब ख़राब कर देते हैं, you know. So किसी का दर्द रखना, किसी की मदद करना, खुद अपनी vulnerabilities को accept करना, अपने failures को भी growth का experience समझना है, that is kind of taken away जब competition आ जाता है क्लास के अंदर। कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता as such, खासतौर पे the competitive ones really don't want to help each other out. So that's number one. इसके अलावा bullying वहाँ से शुरू होती है, because आप लोग hate करते हैं ना star childs को and all of that. So वहाँ पे bullying start होती है, एक दूसरे से comparisons आना शुरू हो जाते हैं. It becomes a rat race, and उसमें से इसके लॉन्ग टर्म रेप्रिकॉशंस हैं कि बच्चे जेलस होना शुरू हो जाते हैं। फिर वो ज़िंदगी में भी देखते हैं कौन कहाँ जा रहा है, किसका क्या करियर है, अपने आप की जो ग्रोथ होती है ना, इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन में सब साइड पर हो जाते हैं। इट ऑल बिकम्स लाइक, यू नो, मैंने उससे आगे निकलना है, मैंने उससे बेहतर बनना है। सो इट रियली डिस्ट्रॉयज़ योर चाइल्डहुड एंड इट ऑल्सो डिस्ट्रॉयज़ योर लाइफ्स। एंड जो बाकी जो चीज़ें हैं ऑफ हाउ टू बी विद ईच अदर, आपसे भी ऑफ एयर जो डिस्कशन हुई थी, दैट वाज ऑल अबाउट, यू नो, हमें आप अपने बच्चे को क्यों आप स्कूल भेजना चाहते हो? ताकि वो सीख सके कि एक दूसरे के साथ किस तरह रहना। तो उसके अंदर भी एक पूरा करिकुलम है कि हाउ टू लिव विद ईच अदर।
So all of those things are sidetracked. When we're just talking about only grades, only marks, which are important, but they're a means to an end for a specific person at a specific time. They're not like an overarching goal for someone's existence in schools. I understand that. लेकिन देखिए, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ. I was in my nephew studies in a school in Dubai, and they have a very similar actually curriculum and I think mindset. उधर भी डेमोक्रेसी चलती है, उधर भी बच्चों की बात सुनी जाती है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो मैं उधर जब था ना, तो ही वाज प्लेइंग फुटबॉल गेम फॉर विद स्कूल टीम एंड ही वाज प्लेइंग अनदर टीम. तो पता नहीं गोल्स होते रहे वो. तो मैं बीच में कोच के पास गया, मैंने कहा स्कोर क्या है? कहते हैं हम स्कोर नहीं रखते. अच्छा. अब मैं आपको मसला बताता हूँ. बीइंग समवन, मतलब इंशाल्लाह you know I have children and they grow up, will definitely make them play sports, and I'll tell you why. You lose, you learn, you hate yourself, you hate that people are better than you, you hate that even for all the failures of my childhood. One thing that I think is not necessarily a bad thing is, देखिए, जो हम करना चाह रहे हैं और यहाँ जो आप करना चाह रही हैं in Edopia, which is sort of making a little world of its own, right? कभी ना कभी तो वो बच्चा बड़ा होगा, बाहर जाएगा. There they keep score. Yeah. And there they're not nice. And there they're going to be jealous. And there they're going to attack you. Yeah. And being someone who was bullied when I was younger, जब 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 साल तक, देखें, ईंटें भी पड़ी, मार भी खाई, सब कुछ हुआ, लेकिन उसी से तो फिर आपको एक resilience या एक temperament आती है. And sometimes, you know, I have a lot of employees, actually I was talking about this on another podcast recently, कि जो Gen Z है ना, मेरा मसला ये है कि मतलब I know I'm not old and we're the same age, लेकिन I look at them and they're quitters, right? Like the first sign of and they're like done, बस नहीं करना, right? 6 महीने 3 महीने. आप देखें आजकल जो बंदा जिम ज्वाइन करते हैं ना, उसका पहला सवाल होता है 6 महीने में 6 पैक कैसे आना है. ये नहीं देखना कि हेल्थी लाइफस्टाइल लॉन्ग टर्म करना है, वो बस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एरा है ना ये. If you couple that with an environment where they've been taught to not compete, what happens when they get into the big bad world? Because the world is bad. I mean, it's unfortunate. I don't want it to be that way. But what do I do then? Okay, there are 3 things that I need to clarify. One is that there's no competition in academics, but there is competition and it comes in spurs. So we do like LSE weeks जहाँ पे हम अपना timetable wrap up करते हैं, and we have like business idea competition, ad making competition, film making competition. So it comes in spurs. So and you work in teams and then you are competing against each other. But you don't remain in a state of competition with another person throughout the year. जो कि academic competitions आते हैं. इसी तरह sports is always competitive at Edopia. It's not like, you know, not going to get a score. Because then what's the point? What's the point of playing, right? So there are the hard parts that you need to retain. But what I did not like about competition is being in a state of competition at all times with all other people. काम छुपाना है, चीटिंग करते हैं. कंपेटिटिव लोग बहुत चीटिंग करते हैं. आप चीटिंग करती थी? मैंने भी की है. हाँ, तो हमारे स्मार्टेस्ट, मतलब मैं तो बहुत चीटिंग करता था, सबसे ज़्यादा हमारे लाइक बच्चे होते हैं ना स्कूल में, अभी भी वो चीटिंग करते हैं. बिकॉज दे रियली हैव टू होल्ड ऑन टू इट ना. सो वो चीज़ हटाई है. बट इट्स नॉट लाइक द आइडिया ऑफ कॉम्पिटिशन इज एलिमिनेटेड. इट कम्स, बट इट कम्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. एक गेम में हो गया, स्पोर्ट में हो गया, LSE वीक में हो गया, देन इट्स gone and all of you are friends. Like all of you are good to each other. The second thing is, आपने कहा कि अगर you know competition हटा दिया और उसके बाद मतलब बुली बच्चे नहीं हो रहे और you know the big bad world out there. एक तो I like wrote an article on it like quite a long time ago, and that's like, you know, what is that world out there that we're all dreading? Because it's not like a one uniform blob of a world out there. There are like multiple realities out there. And a child who takes decisions right from a very early age is also going to craft a reality for himself or herself. You know, I can choose to be a corporate person, and I can choose to be someone who's living on a farm in a container. You know, that's a choice that I'm going to make based on whatever my own personal experiences are, who I am as a person. So your children are not getting into a blob. They're going to be able to make choices, and a school like this really enables them to make choices early on, क्योंकि सारा कुछ उनके ऊपर मुसल्लत नहीं किया जाता. Day one से उनको determine नहीं किया जाता कि आपने कहाँ बैठना है, कहाँ चलना है, क्या करना है. They have to make the hard things. The third thing is the social jungle. I feel like Edopia is a massive social jungle when it comes to this, because there is so much conflict that happens on grounds, जो कि बाकी schools में नहीं होता. क्यों?
वो इसलिए होता है कि हमारे बच्चे फ्री बहुत होते हैं, दे डू गेट लाइक अ लॉट ऑफ फ्री टाइम. हमारे स्कूल्स में नहीं होता था. वी यूज्ड टू गेट लाइक 20 minutes ऑफ फॉर आवर ब्रेक. उसी में कैंटीन से कुछ पकड़ो और उसी में खेलो, उसी में पॉलिटिक्स करो, सब कुछ करो, गो बैक टू योर क्लास एंड यू गो एंड सिट विद समवन हु इज नॉट इवन योर फ्रेंड, लाइक हु हैज बीन असाइन्ड टू सिट नेक्स्ट टू यू बिकॉज यू गाइज टॉक टू द पीपल दैट यू आर सिटिंग नेक्स्ट टू अदरवाइज, राइट? सो वो इतना कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट था कि वहाँ पे यू वर रियली अंडर द रेडार एट ऑल टाइम्स एंड यू वर जस्ट हैंडेड ओवर. अच्छा म्यूजिक क्लास में जा रहे हैं, पूरी क्लास उठ के जाके म्यूजिक क्लास में बैठ जाएगी. अब आर्ट क्लास में जा रहे हैं, सर आ जाते थे ना हमारे हमारे सर आते थे एंड वी यूज्ड टू ऑल सिंग इन द क्लास, जो भी था. बट ऑल आई एम सेइंग इन एज में से एक म्यूजिक क्लास का तो नहीं था, cuz that doesn't really count. No, that doesn't count. No, I wasn't in the music thing anyway, but I'm just saying कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड था सब कुछ. सो कॉन्फ्लिक्ट्स रिलेटिवली बहुत कम होते थे. Whereas at Edopia आपके पास, बच्चों के पास, every day there is one slot where no one is going to ask you what you're supposed to do. That's like a choice time. You want to sleep during this time, you want to eat, you want to play. ये हर रोज किस तरह का था? क्या मार होते हैं दूसरे को? क्या नहीं मारते नहीं है, but they do get like into each other's face pretty much often as compared to other schools, right? उनकी लड़ाइयाँ right from the preschool जो है वो भी एक inquiry based setup में, it's a play based preschool, so उनकी वहाँ पे भी seats and lines and ये सारा कुछ नहीं है. play based preschool का क्या मतलब है? प्ले बेस्ड प्री स्कूल का ये मतलब है कि टॉप डाउन इंस्ट्रक्शन नहीं है प्री स्कूल के अंदर. सो द चिल्ड्रन कम एंड दे, आपने कभी देखा है बच्चे जब अपनी नानी दादी की तरफ जाते हैं and they do stuff like they're playing, they're doing a lot of pretend play, कभी forts बना रहे होते हैं, कभी चीज़ों से बना रहे होते हैं. That's what a play based preschool is. And as मैं दादी क्या क्यों ले जाऊँ, आपको क्यों फीस भरूँ? ले जाएं अगर आपकी दादी इतनी वेलकमिंग है और आपको रखती है. मतलब वो बच्चा कुछ सीख रहा होगा उधर या बस खेल रहा होगा? क्यों नहीं सीख रहा होगा? उसमें नहीं सीख रहा होता जब वो फोर्ट्स बना रहा होता है या जब वो आपस में किसी चीज़ को फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, पडल्स के अंदर छलांगे मार रहे होते हैं, फिर पत्थर डालते हैं, फिर और चीज़ें डालते हैं, उसको बिल्ड करते हैं. दिस इज़ ऑल लर्निंग. सो द रोल ऑफ द एजुकेटर इन अ प्री स्कूल, ऑल्दो थोड़ा सा हम डिफरेंट टैंजेंट पे चले जाते हैं, बट दैट इज़ टू फैसिलिटेट दैट वे, जो कि बहुत मुश्किल काम है. हाउ डू यू फैसिलिटेट प्ले? By observing what the children are doing, and the next day you, for instance, let's say that you see that the children are playing in the sand pit and they're they're saying, oh, when I hold sand in my hand, ये तो गिर जाती है and I'm not able to cup it in my hand. How can I, आपस में कोई discussion हुई, इस तरह उन्होंने observation ली. Next day they're going to come and maybe they leave a bucket of water near the sand and see how this is going to change the experience for the children when they're playing. They keep on adding. Like psychology or sorts, yeah, you're always observing कि बच्चे क्या कर रहे हैं and how can you build this further, how can you make it more complex. So that's what the preschool teacher does. But given कि वो बच्चे एक टेबल पे बैठ के worksheets नहीं fill कर रहे हैं at all times, they're not doing coloring and all, they are in each other's face, they are fighting with each other, they want the same thing at the same time, they're doing team ups and pay कि मैंने उससे बात नहीं करनी, वो मेरी best friend है, ये मेरी best friend नहीं है. All that messy stuff that happens all the time at the school, and that is when you build their capacity to get along with other people and to negotiate their presence. So it's a very crazy jungle at times. And in this jungle, when I was younger, and मेरी एक छोटी बहन है who always tells this story about how she had a principal in her school who told her to go kill herself, and she was very traumatized by this. And fair enough, I mean, she was 8 or something, 10, right? Mental health and wellness, पाकिस्तान, मेरे ज़माने, आपके ज़माने में, एटलीस्ट मेरे स्कूल में तो ऐसा कोई नहीं था कि भाई क्या बुली हो रही हो तो मैं क्या करूँ. अगर कोई मसले मसाइल हैं साइकोलॉजिकली, और बच्चे उस एज पे बहुत एक स्पंज की तरह होते हैं, राइट? एंड इफ़ यू सॉर्ट ऑफ डिप देम इन द रॉन्ग थिंग, दे दैट्स वाई कभी कभार अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं. बच्चे स्ट्रगल करते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उनको बाद में फेस होते हैं क्योंकि वो जो चीज़ें हो रही होती हैं उस एज पे हो रही होती हैं. What do you guys do in terms of mental health and wellness? Do you have a wellness coach? Do you have a psychologist on campus? Do you have a teacher they can go to? Or do you train the teachers to be more open to these things? So we have a separate subject called social emotional learning. We do have a social emotional coach on campus who does deal with all these aspects, and so basically we work on 3 levels. We work with that coach, giving formal classes to the children and also being available for informal interactions and for building their capacity whenever they're in these conflicts, in these difficult situations on a personal level or on a social level. Then we have that
coach working with the teachers to build their capacity of how to be with children. Because बहुत सारे जो traditional school होते हैं ना, उनका starting point before the school just begins is क्या पढ़ाना है, कौन सी किताब लगानी है, कौन सा syllabus है. Whereas for us the starting point was बच्चे को इज्जत कैसे देनी है. You know, how do you respect a child, and everything follows from that point on. And the third one is कि we work with the parents and build their capacity ताकि हम एक respectful parenting का एक माहौल build कर सकें. Having said all of that, ये तो आप उनकी एक जनरली एक अच्छा इंसान बनने के लिए उनकी एक कैपेसिटी बना रहे हो, अपने मसले खुद सॉल्व करने के लिए, दूसरों के मसले सॉल्व करने के लिए. बट आई काइंड ऑफ ऑल्सो रिमेन ऑन द एज अबाउट दिस एंटायर थिंग इन अ वे कि आई ऑल्सो डोंट वांट द चिल्ड्रन टू बिकम टू सॉफ्ट, बिकॉज like you said, life is not ever going to be a bed of roses. You are in a constant state of toil, whether you are successful or whether you are not successful. Even a successful person experiences toil and high levels of emotional turbulence at all times, I feel. तो हम लोग, क्योंकि हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, ना टीचर पूछती थी, ना घर में इतना ज़्यादा वो था, तो हम लोग रिजिलियंट हो गए थे और हम फिर लेते थे हर तरह की चीज़, हम पिघलते नहीं थे बहुत जल्दी चीज़ों से. आई वुड वांट कि while having all of these infrastructures in place, it is still important for children to not quit. It is still important for children to, you know, go through things, and you know, experience the hard parts of it. Just the other day we did like a session with the children, and I was just, you know, talking to the middle year students. I said, it's not about, you know, whether you like learning at school. Learning एक process है, you know. अगर तुम अपने पसंद की भी चीज़ पढ़ना चाहोगे, करना चाहोगे, वो भी एक आसान काम नहीं होना. इट इज़ गोइंग टू हैव दैट हार्ड पार्ट टू इट. मैंने अरबिक पढ़ना शुरू की अपने शौक से, बहुत मुश्किल लगी, लेकिन आई हैड टू, यू नो, गो थ्रू इट बिकॉज आई लर्न चाइनीज, मैंड्रिन. आई स्वेयर मुझे मैंड्रिन वैसे तो अपेरेंटली सीखी हुई है मैंने, HSK level 5 which is like fluency, but I don't really know Chinese. The thing is कि 3-3.5 साल पढ़ी ना, चाइना में भी रहा, चाइनीज़ नहीं सीखी, लेकिन ये मुझे रियलाइज़ होना शुरू हो गया था कि एप्टीट्यूड होता है ना, सो यू रियलाइज़ कि अब जिस तरह चाइनीज़ मुझसे पास सीखी नहीं जाती. आई कांट लर्न अ लैंग्वेज, आई हेट डूइंग इट, आई हेट एवरीथिंग अबाउट इट, बट इट मेड मी रियलाइज़ कि इंटेलिजेंस इज़ रिलेटिव, राइट. आप एक मुझे टॉपिक दो जो आई एम गुड एट और आई एन्जॉय, और मैं यूँ पिक करूँगा. आप मुझे एक टॉपिक दो जो मुझसे नहीं होता, और आई वुड पुट 80% of effort and get 20% the result. And it's human nature for that to happen. And it's important for people to realize that as well. कि आप अगर सिर्फ आप वो चीज़ें करोगे जिसमें आप अच्छे हो ना, तो आपको लगेगा कि हर चीज़ आसान है. Even for those things जिसमें आप अच्छे हो ना, it's never easy. That is what every child also needs to understand. And this is something that we talk to children about as well. So कि अपनी पसंद की भी कोई चीज़ लोगे ना, उसके भी steps होंगे, उसके भी modules होंगे, उसका भी एक curve होगा that you have to go through, right? So इट्स नॉट लाइक कि, यू नो, बच्चे जाके कहते हैं ओ क्योंकि हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है सब कुछ, इसलिए हमारा दिल नहीं करता पढ़ने का, इसलिए हमसे असाइनमेंट नहीं हो रही, यू नो, जस्ट लेट अस बी एंड ऑल. कुछ तो करोगे ना, जो भी करोगे उसमें मेहनत चाहिए होगी. सो इट्स द डिस्पोजिशन दैट यू हैव टू रियली वर्क ऑन बच्चों के साथ, और साथ साथ उन्हें बताना कि भाई लाइफ टफ है. इफ यू आर गेटिंग, दे डू फेस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स इवन एट देयर डू. इट्स नॉट लाइक अ, you know, I don't know. It's not like a softy cute world inside कि जहाँ पे जो मर्जी सब कुछ करते हैं, कुछ that's actually very refreshing to hear. Because my problem is कि I'm not opposed, like I said, I think that हमारे साथ रहती हुई थी, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि आप completely you know, एक softy बच्चा पला पढ़ के बड़ा करें. जो कभी कभी मैं देखता था ना, some kids who want to, you know, the American school stuff like that, KS, I don't know if any of you are watching, sorry about this, लेकिन इस तरह के जो बच्चे थे वो बेचारे स्ट्रगल करते थे यार. ऑफ कोर्स स्ट्रगल करते थे ना, वो इतने they stuck out like sore thumbs. I could look at them from a mile away and be like, हाँ, you know, नहीं, ये तो हमारी कोई एजुकेशन सिस्टम का नहीं है. It's important to have a balance. खैर, one of the other things I was wondering is, एंड में तो टीचर्स ने पढ़ाना है ना. अब टीचर्स आप एग्जिस्टिंग स्कूल से उठा रहे हैं, टीचर्स आप अपनी तरफ से ट्रेन कर रहे हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे तो दे आर योर, यू नो, फुट सोल्जर्स. स्कूल इज एज गुड एज योर वर्स्ट टीचर कहते हैं. एग्जैक्टली. सो हाउ डू यू, मतलब हमारे स्कूल्स में फ्रबेल्स, बीकन हाउस एक्सेट्रा, वैसे नाम नहीं लेने चाहिए लेकिन चलो, इस तरह के जो टीचर्स होते थे, some of them were not qualified, some of them were not interested, most of them were not interested. वो बेचारी, you know, सेकंड इनकम चाहिए थी घर में, तो कोई टीचिंग करने आ जाती थी, हमसे भी तंग, हम उनसे भी तंग.
how do you increase or set that bar? अच्छा पता है, all my life I've even at Beacon and my entire journey is with Beacon, I've had good teachers, The problem was with what they were given, वो मसला था. It's not like they were not well-intentioned people who were coming in and trying given to का मतलब क्या? 30 बच्चे एक टाइम में 40 मिनट, it's a little inhumane to consider कि एक इंसान 30 बच्चों के साथ आएगा, एक रिलेशनशिप भी बिल्ड करेगा, लेक्चर भी डिलीवर करेगा, एक्सीलेंस भी अचीव कराएगा, अपनी सैनिटी भी मेंटेन करेगा. 30 बच्चे एक सेक्शन में, राइट? एंड देयर आर लाइक 4 different sections that they have to go to, and then they have to check copies of all those 4 different sections, and like there's so much workload that a teacher experiences, then the bureaucracy of the system, then lack of validation, like there's so much going on in a teacher's life. And फिर घर जाना और फिर अपने बच्चों को देखना और फिर अपने घर के मसाइल को देखना, because हम हैं तो पाकिस्तान में ना, like not all men are going to come and contribute to child raising, क्या होता है, rearing and all of that. They're still going to say कि भाई ये तुम्हारा डिपार्टमेंट, तुम अपने शौक से जॉब कर रही हो, मैं तो कह रहा हूँ छोड़ दो, ठीक है ना, बेहतर है घर बैठ जाओ. So it was not easy for a lot of people to be teachers, and yet they were literally giving their best. They were doing what they could do. So I have always felt कि मैंने स्कूल स्टार्ट करने से पहले ना बिल्कुल एक थोड़े से विंडो के लिए 3-4 months के लिए I taught in another school, and I was like, oh my god, this is so hard, Which school did you teach in? I don't want to take a name. Okay. You take names very liberally. I don't want to take a name. हम तो इस इंडस्ट्री में ही नहीं, हम वैसी बातें कर रहे हैं. So it was a good school, but the dilemma, see, this is the problem with the education system. आप education को affordable बनाओ तो you can't maintain ratios. आप उसको महंगा कर दो, यू कैन मेंटेन रेशियोज, वो आम आदमी की रीच से निकल जाता है. लेकिन वैसे ऑनेस्टली बड़ा आपने, दिस इज आई ओपनिंग थिंग, मेरे पूरे चाइल्डहुड में भी रीइवैल्यूएट कर रहा था कि बात आपकी वैसे ये सही है. 40 बच्चा क्लास में 3 क्लासेस में पढ़ा रहे थे, 120 और इतनी ज्यादा कॉपीज लेके जाती थी, डिग्गी भरी भी होती थी, इसलिए तो वो बस हर चीज को बस रैंडम मार्क्स दे रही होती थी. उसमें भी डिलीजेंस होती थी. मुझे तो कभी किसी ने रैंडम मार्क्स नहीं दिए. मैं तो जाती थी ना 0.25 बढ़ाने के लिए, आई वाज वन ऑफ दोस्त. तो मेरे तो कभी गलत मार्क्स नहीं आए, कहीं पे भी टीचर ने चेकिंग में गलती नहीं की, बिकॉज ऊपर से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था. सो आई फील लाइक टीचर्स जनरली कोई भी अपने घर से उठ के बाहर निकलता है, दे वांट टू डू गुड वर्क, राइट? नाउ देन द सेकंड स्टेप इज़ कि आप टीचर्स को कैसे कंफर्ट दे सकते हो, उनकी कैपेसिटी कैसे बिल्ड कर सकते हो. एंड दैट्स समथिंग दैट हैज़ ऑलवेज बीन अ प्रायोरिटी फॉर मी, कि मैंने अपने टीचर्स को भी कंफर्टेबल रखना है. आई वांट टू मेक श्योर कि दे फील वैल्यूड, दे आर लर्निंग समथिंग न्यू, दे आर एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट इन देयर ओन वेज. एंड अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हर इंसान चाहे वो कहीं का भी पढ़ा हुआ है, कहीं भी उसका एक्सपीरियंस होता है देयर, राइट? यू नीड टू, एंड मेरे से ज़्यादा ही होगा, बिकॉज आई एम नॉट द वन हु स्पेंडिंग टाइम इन द क्लास. दे नो अ लॉट मोर अबाउट द चिल्ड्रन देन आई डू. सो आई नीड टू value what they are saying, and I need to allow them, maybe allow them, that's even a derogatory word. I need to enable them to use what their own feeling and intuition is, to put it back into the class and make it work. So mera role generally school ke andar is to really have like a lot of capacity building workshops. मैं उनकी trainings खुद बहुत ज़्यादा भी करती हूँ, उनको support भी provide करती हूँ, but in the end we do try to look for people who are very passionate about the idea of education. Even अगर उनका experience 4-5 सालों से ज़्यादा का नहीं है, कभी 1-2 का भी होता है, but if their heart is in the right place, they have relevant background and they're willing to learn, then we do include those people in our team. And on your own personal journey, कभी I'm only saying this because CV आपका वही 13 और पता नहीं लम्स और हार्वर्ड और ये सब. जनरली पाकिस्तान में एक स्टिग्मा है कि जो ख़वातीन या जो लोग एजुकेशन में जाते हैं आर नॉट गेम चेंजिंग लॉट, एंड विच इज़ वेरी सैड रियलिटी, क्योंकि आपकी टीचर्स ही आपकी फ्यूचर डिक्टेट करते हैं. लेकिन यहाँ पे those who can't do teach is a mantra that is sort of followed, and जो आपकी क्रीम होती है वहाँ पे सोसाइटल प्रेशर उस पर डालता है कि यार आप जाके कोई कॉर्पोरेट नौकरी करो, जाके कोई आई डोंट नो कोई इस तरह की धंधा करो, बिजनेस करो, कुछ करो. आप पे कभी इस तरह सोसाइटल या फेमिलियल प्रेशर था कि यार, और वॉज इट अ वेरी अंडरस्टूड थिंग कि यार नहीं एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशनिस्ट अब बनी है ना, इसमें तो पैसा है, एंड एवरीबडी रिस्पेक्ट्स दिस रूट्स के ओनर और सबको तो हम सल्यूट करते हैं. लेकिन टीचर जब आप बनने जा रही थी उस टाइम पे इट्स नॉट एज कूल.
अच्छा, मैं तो खैर टीचर इसीलिए बनना चाहती थी कि मुझे पता था मैंने स्कूल खोलना है, तो मैं तो अपना एक सर्वे करने गई थी कि व्हाट इज इट गोइंग टू बी लाइक. आई वांटेड टू जस्ट स्टेप इनसाइड द शूज ऑफ अ पर्सन एंड सी कि व्हाट आर द challenges that they are going to face if they come into the system. But it is a very tricky market, to be honest, because जो like you said cream है, they don't choose teaching unless कोई circumstances ऐसे हो जाएं that they are being forced to do so, you know. बहुत लोग चॉइस पे आते हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट क्रीम क्या है, लाइक एकेडमिकली साउंड पीपल जिनकी ज़्यादा एज. देखिए मैं आपको एग्जांपल दूं, आई डोंट एग्री विद दैट, बिकॉज मैं आपको मजे की बात बताता हूं ना, यहाँ पे लेट्स फॉरगेट लाइक स्कूल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स भी, यहाँ वो वाला बंदा है जिसने बैचलर्स मास्टर्स PhD ये लेकिन कभी कहीं नहीं काम किया, और वो आपको पढ़ा रहा है जिसके बारे में उसको कुछ नहीं पता. या फिर वो वाला बंदा है जिसने 2 3 4 5 8 10 साल काम किया है, एंड देन इज सो nearly disparity is not just at the high school level, at the university level, at a higher level. फिर यहाँ पे एक और बात ये भी है ना कि I don't know अगर आपके ज़माने में ये होता था या नहीं, टीचर्स O levels तक तो O levels के बाद O levels A levels के बाद तो ऐसे हो जाते थे कि एक वो थी धंधा था. स्कूल तो वो आते थे मार्केटिंग करने, PR करने, असल काम होता था अपने ट्यूशन सेंटर, अपने एकेडमी, अपने नोट्स बेचने, अपने पता नहीं क्या साइंसें होती थी. अब मैं हमेशा ये सोचता था कि क्लास तो वो लिटरली आते थे अपनी सेल्स पिच देने, उसके बाद आपने उनकी ट्यूशन जाना है, आपने उनकी पता नहीं एकेडमी जाना है, फिर आपने उनके नोट्स खरीदने हैं. अब तो पता नहीं ऑनलाइन भी होती होंगी चीज़ें, आई डोंट नो, लेकिन आई ऑलवेज फेल्ट लाइक यार भाई तो फिर तू मतलब व्हाट डू आई पे द फीस, आई मीन व्हाट डू माय पेरेंट्स पे द फीस. अगर आपने इधर आके मुझे सिर्फ ये बताना है कि जो सीखने वाली बातें हैं ना, वो मेरी एक सीक्रेट एकेडमी है, उधर जो बचे हैं. Obviously it became like pretty messy, जो पूरा O level scene था काफ़ी हद तक, like we have all experienced that. For me देखें, I feel like मेरे जो batchmates हैं जितने भी लम्स के थे, no one is here, right? I'm the only one in Pakistan now. Maybe one more friend who also has like a family thing. तो वो पाकिस्तान में है, ठीक है, बाकी तो सब बाहर चले गए, and they are obviously making lots and lots of money. Would they become teachers in a school in Pakistan? Perhaps not, you know. But then I also see that what kind of teachers would they have become if they became teachers? Would they really be way too amazing beyond what we are getting right now? Yeah, kya hota? So I also feel that it's not only about like what university you went to and aapka kya us time ka, you know, growth pathway kya tha. Maybe they would have been bad teachers too. Honestly, because वो एक और skill है. You need to be really nurturing, and आपका एक और disposition होता है for you to be a good teacher. It's not linked to the university that you go to, honestly, और अगर आप top cream हैं या नहीं. नहीं, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, and I can point to examples. For example, अगर आप sports देखें, the best coaches are never the best players. Okay, there are some players that were incredible that went on to become really good coaches, be that in cricket or football or anything. Lekin the general consensus is that the two skills are completely different. पहली बात. दूसरी बात, sometimes I think कि जो star player होता है ना, star child होता है, वो कभी कभार ये comprehend नहीं कर पाता, उस लेवल पे नहीं आ पाता. तो अगर आप फॉर एग्जांपल मैं फुटबॉल की एनालॉजी दूं, तो फुटबॉल में जो बेस्ट प्लेयर्स होते हैं ना, वो फिर जब कोचेस बनते हैं, दे एक्सपेक्ट यू टू डू व्हाट दे कुड डू, एंड उनको ये बात हजम नहीं हो पा रही होती कि एक नॉर्मल फुटबॉल प्लेयर ये चीज़ कर ही नहीं सकता ना. मतलब आप जो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, आप दे रहे हो बेस्ड ऑन योर केपेबिलिटी, नॉट हिज केपेबिलिटी. सो या आई कंप्लीटली एग्री. देखें, व्हेन आई से अ गुड टीचर डज नॉट नेसेसरली मीन एकेडमिकली क्या पढ़ा है. I don't even think at a high school level it even matters कि आपने मतलब quote unquote इंडस्ट्री में क्या किया. I think. Do you really know how to get down to the level of the child, and are you able to scaffold their learning within their zone of proximal development? This is who a good teacher is. And are you able to convey your message to them in a way that sort of, you know, gets through across, yes. And are you able to understand them? Yes. Can you listen to their problems but लेकिन वही वाली बात है ना कि that is a unique skill set in itself. ऐसा नहीं है, मतलब in fact if anything it's a very underrated skill set in especially in South Asia. पाकिस्तान में तो हम ये इस चीज़ को देखते ही नहीं ना. मैं किसी को ये समझा भी रहा था कि so for example like in my work, my line of work, the things that I'm involved in, I delegate almost everything. Like I don't do anything, right?
I think that's a skill, and I think I trust people to do what they're good at, and I trust that they can do it better than me. And यहाँ पे ये चीज़ negatively मानी जाती है ना, so people turn around be like यार खुद क्या करते हो, खुद क्यों नहीं कर सकते, hands on क्यों नहीं हो. और मैं उन लोगों को ये कहता हूँ, देखो अगर आप दुनिया में कोई अच्छी large institution देखेंगे ना, सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन, सिस्टम होगा, वो एक सिस्टम होगा. एक बंदा अगर खुद हर चीज़ कर रहा होगा तो वो एक छोटी सी मॉम एंड पॉप शॉप से ऊपर कोई चीज़ बन ही नहीं सकती. अगर आपने बैठ के खुद अपने बच्चों को पढ़ाना है, अगर आपने उनको उन्हीं बच्चों को फिर काउंसिल भी करना है, तो बेहतरीन आप 8 बच्चे पाल लेंगे और उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता ना. खैर, मैं वैसे आपको ज़्यादा टाइम और नहीं लेता. जस्ट लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस. यू सेड दैट यू माशाल्लाह वर जस्ट हैड अ डॉटर. एडोपिया में पढ़ेगी? नहीं, एडोपिया का वर्जन 2 में पड़ेगी. अच्छा, वर्जन 2 क्या है? मैं so there are a couple of things जो कि मेरे माइंड पे रहती हैं, and I feel like एडोपिया में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, but like I really want to give self-directed learning a form, a structure, a system around. I want to build a system around self-directed learning as well, जहाँ पे the children really determine what is it that they have to learn rather than the adults determining it for them. Like preschool के level तक हम अभी तक ये कर रहे हैं, but I want to give it a curriculum change. I mean, what's the change going to be like? The change is going to be like that, rather than them coming to a class and a teacher saying कि आपने open to this, like ये video मैंने आपके लिए shortlist की है and we're doing a project or whatever. They won't go to a class. They would instead say कि for the next month I want to learn about stars and I want to learn everything about this, and these are my specific goals about the stars. And are there schools in Europe, the US, anywhere that you emulate? There are schools in the world that are based on self-directed learning. There are none in Pakistan right now. But yes, there are schools that are very old schools, like 100-year-old school भी exist करता है, Summerhill, which is in UK, जो कि यही करता है कि the children determine what is it that they're going to learn. So obviously I'm not going to replace Edopia with that. Edopia still remains there for families who prefer this kind of learning and for children जिनके लिए this is working out. But I also feel that there is a niche or a certain group of parents and children जिनके लिए even Edopia is, perhaps not really... Like outdated, a little outdated. And are you one of those parents? I might be. I really would have to see what Jaza's journey looks like. But if Jaza is your daughter, right? Yeah, she's my daughter. So if for her, she is not feeling, she can't, if she's still feeling that this is too top down for her, then yes, maybe I would want her to then be doing a lot more self-directed learning than this. So yeah, that's one. ठीक है. अच्छा, so this is my last question, and I think this is an important question because they came. Firstly, I thought I'll tell you, I don't know about the audience. I am very impressed. My wife is expecting, so I'm going to have a kid soon. I would put my kid in a school like Edopia because from what you're saying, it sounds great. But more than what you're saying, it sounds great. You seem to know what you're doing. My problem, and I've noticed this with schools across Islamabad. मैं कहीं और रहा नहीं हूँ तो मैं कह नहीं सकता. Unfortunately, they're based around so much. This is companies as well, so I can understand that. Founder कह लें, principal कह लें, एक शख्स के इमरान खान कह लें. हाँ, इमरान खान कह लें, बिल्कुल. नहीं तो मैं आपको अगेन आपने कहा है तो मैं नहीं नाम लेता बहुत सारे स्कूल्स के, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स थे जो एक सर्टन लीडरशिप के अंडर बने, प्रॉस्पर किए, उठे, छा गए, and then that person, that woman or that man, and either passed away, retired, whatever. Had children, any scenario, and got whatever, was uninvolved in the business in whatever capacity. अब अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, स्पेशली इन एजुकेशन, वो फाइनल डिटेल्स देखने के लिए एक, वरना फिर वो एक चर्न बन जाता है, जिस तरह बहुत सारे हमारे स्कूल से भी आपको नज़र आते हैं और मेरे ज़माने में भी होते थे. वो चर्न इसलिए होता है क्योंकि वो अटेंशन टू डिटेल चली जाती है. वो अटेंशन टू डिटेल एक इंसान दे रहा होता है. अब एक सिस्टम और एक इंसान में बहुत फ़र्क है. फ्रॉम व्हाट आई कैन टेल, I would put my kid in your school if you are managing it. But what happens when you are not looking at Edopia and now you're looking at XYZ new business, or for whatever reason you're taking time off, you're doing whatever you like, right? My question is, how do you plan on tackling that? And generally this is in my opinion education's biggest problem in schools in Islamabad. So how does anyone tackle that?
So when I started the school, I was around 22, right? 22, 23 when I started working on it. And obviously, I started off from that point जहाँ पे मैं ही कॉल अटेंड करती थी कि मैम जवेरिया से बात कराती हूँ. हाँ जी जवेरिया बात करी हूँ ना, because there was like a dearth of human resource shortage and everything. So that was there, you know. But over time, I feel that delegation is something that I have learned to enjoy as well, and at the same time trust people and trust what they have to, you know, add to the system. So ek mera bhi apni capacity banna shuru hui. And I would say in the last 3 to 4 years, I've become more of a systems person. Like I want to establish a system. I want to have everything in a guidebook. Our SOPs होने चाहिए. हमारा you know जो भी चीज़ें जो कि culture को वो बनाती हैं जो Edopia के लिए बहुत central है, all of that needs to be in a system. ताकि even if I have to step out, my sister has to step out, anyone has to step out, people know what is it that we're doing over here, and you know what makes it. Your sister is also involved in the business? My sister is also involved. Achha. She's 5 years younger and she's there. Achha. So everyone knows what to do at this school, for instance. But then there is more to it, right? ये तो हो गया कि Edopia का system in place हो जाएगा, and alhamdulillah, like the team really understand what needs to be done, because मैं तकरीबन 3 साल school से off थी भी, more or less. I was a little away. COVID का time था, फिर when my daughter was born, so I had to take a back seat and the school went on. But obviously COVID की वजह से भी school की culture पे hit आई थी, but alhamdulillah the team really did an amazing job at keeping it up, you know. Obviously वापस आके मैंने भी कुछ चीज़ें की, टीम ने भी की, वो पोस्ट कोविड एरा वैसे ही डिफरेंट है, ठीक है. एक और चीज़ जिस पे मैं बहुत ज़्यादा अब वर्क कर रही हूँ वो है ऑन बिल्डिंग द कैपेसिटी ऑफ अदर पीपल टू स्टार्ट स्कूल्स लाइक दिस, बिकॉज I think no one else is doing it as well. Wait, you want to build the capacity of someone else to start their own schools. अब अभी कह रही है आप competitive हैं, you want to start. मैं नहीं हूँ अब competitive. अच्छा अच्छा, you evolved. मैं थी, I was. अच्छा, अब बड़ी हो गई हैं. अब मैं बड़ी हो गई हूँ, and I know that I am not going to be that person जिसकी यहाँ पे 50-60 branches हो, and I know people want a school like this for their children, right? There's so many people. कभी कोई कहता है फीस ज़्यादा है, कभी कोई कहता है दूर ज़्यादा है, कभी कहता है कि मैं you know wherever I am वहाँ पे possible नहीं है. So I want to start a process जहाँ पे I want to give consultations and trainings to people on how to start a school like this. I want कि parents की capacity build करना चाहिए, if they want to like really step away from traditional system, how are you going to do it? How to start like a parent co-op, for instance, if you don't have the funding to start a school of your own. If you have the funding to start a school parent of your own. Parent co-op क्या होता है? Parent co-op, families come together and they start educating their children like in a homeschooling setup, but a lot more organized. Basically हम गाँव वाले सिस्टम में वापस चले हैं. Which is brilliant, you know, works well. It's like a small. I'm a huge advocate of small community schools. मेरे हिसाब से जो स्कूल 300 से ऊपर चला जाता है ना, 300 is also a big number. वो स्कूल नहीं रहता, वो बस एक institution हो जाती है. Institution churn out करना शुरू हो जाता है. And there's like a lot of value in small setups. And मैं literally I'm not going to be that person who makes all these setups. And I don't want to have like my ego को boost मिलने जाएगा कि वो आपकी 50 branches हैं. But to what end, you know? So I want to help people. किसी ने भी alternate school से खोलना है, मैं बताती हूँ कैसे खोलते हैं, ठीक है ना, अपना खोलो and do this. So that's another thing that I really want to work on, because alhamdulillah Edopia सही चल रहा है. We have like an online version as well, Edopia online. वो भी alhamdulillah इतना, क्योंकि इस पूरी जर्नी से मैंने जो सीखा उसको मैंने इस तरह बना लिया कि मुझे बहुत कम इंटरवीन करना पड़ता है, और उनकी जो प्रोजेक्ट हेड है वो उसको आगे लेके चल रहे हैं, वो बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. इट्स डूइंग रियली वेल. एंड जो हमारी कोर वैल्यूज़ हैं वो वहाँ पे भी नज़र आती हैं, सिस्टम हमारा वाला ही नज़र आता है, बट इट्स नॉट लाइक समथिंग जिसमें मुझे डे टू डे स्टेप इन करके देखना पड़ता है कि वो क्लास हुई या नहीं हुई, बिकॉज द सिस्टम इज़ इन प्लेस एंड एवरी वन इज़ फॉलोइंग थ्रू विद दोज SOPs एंड एवरीथिंग टू मेक श्योर इट्स अ गुड एक्सपीरियंस फॉर द पीपल हु आर एक्सपीरियंसिंग इट. अब अगला स्टेप मुझे जो नज़र आता है, एक तो वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, दैट्स मोर लाइक अ पैशन प्रोजेक्ट जस्ट टू फुलफिल माई ओन आई डोंट नो हॉबी. मेरा हस्बैंड कहता है दिस इज योर हॉबी, दिस इज नॉट लाइक, क्योंकि इट्स नॉट लाइक. Is your husband involved in the school as well? Yes, he is. अच्छा, Yes, yeah. family business. सही है. Family business. He's very, he's the backbone in terms of support. So I also need like a critic, right? Yeah. So he's that critic. वैसे and this is sorry, मैं लंबा चल रहा है थोड़ा, लेकिन I'll ask you my last question and then I'll let you go. I just realized कि you're 31, 32. 32, ठीक है. Husband approximately the same age, right? Yeah. Sister is 25. She's 7 years younger than you. 28. 28. Turning almost turning 28 now. Yeah.
Now, how many employees do you have at Edopia? More than 100. And I'm assuming 95 of them are older than you or the same age as you? Or? Not really. But when I you started off, they were all everyone was older, yes. Yeah, so was that challenging? I mean, that happened with me as well. I was really young when I started, but thoda sa field difference bhi hai, you know, because I could hire young lots, right? So most of the first 10, 15 people I hired were also my age. So they were also 22, 23, 24. You couldn't particularly do that, right? So was that a challenge? I never had a challenge working with people who were older than me. It was always very easy for me. मेरे लिए जो ओवरऑल जो आई थिंक एडोपिया की जर्नी में हुआ है ना, रिक्रूटमेंट में डिफरेंस आना शुरू है. बिकॉज इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स ये वो सोशल सर्कल के लोग ज्वाइन, एंड आई डिडंट रियली एंजॉय दैट पार्ट ऑफ इट दैट मच. बिकॉज वो जो एक आपको चाहिए होता है ना, एक इदारे को इंटेग्रिटी के साथ चलाना, वो नहीं हो पा रहा होता था. सो नाउ आई डू हायर पीपल हु आर अराउंड ऑलमोस्ट माई एज, लिटिल यंगर, समटाइम्स ओल्डर, बट हम लोग मोर लेस एवरेज एज आप समझो कि 30 ही चल रही होती है स्कूल के अंदर. सो दैट वर्क्स. बट आई नेवर हैड लाइक अ प्रॉब्लम वर्किंग विद पीपल हु आर ओल्डर देन मी. आई थिंक वो बिकॉज आई थिंक वो एक सर्टेन एज के बाद ना, दैट दोज लाइन्स बिकम अ लिटिल ब्लरी. लाइक एक 3 साल का बच्चा और एक 4 साल के बच्चे के एबिलिटीज में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, राइट? बिकॉज न्यू माइलस्टोन्स आर बीइंग अनलॉक. लेकिन एक वो नहीं होता. बट एक जो यू नो लाइक 22-23 साल का बंदा या 35 साल का बंदा इतना ज़्यादा नहीं होता. मैच्योरिटी होती है. 23 पे I'd like to hope I'm smarter than I was in 23. I mean, like, I hope so. I think I'm a lot more composed than I was. Maybe you were mature for your age. Yeah, that would make sense. I don't know if I was, but I'm more composed now than I used to be back then. And I still think it's a journey. Lekin yeah, I enjoyed working with older people. ठीक है चलें यार. दिस वाज वेरी इंसाइटफुल. मैं तो अपने बच्चे एडोपिया में डाल दूँ, तो बाकी उनको देखते हैं. थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट. Thank you. It was nice being here. Thank you guys for watching. If you like the content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.